Good afternoon. Welcome to Lukman IS. This is Takkar Rapid Series and we are discussing the 10 MCQs based on current affairs. These 10 MCQs are based on yesterday's current affairs and that's why we are discussing 13th February based or current affairs based questions, and this is class 55. Okay, so without any delay, let's discuss the first question. Consider the following statements and we have to identify the correct statements among these two. ठीक है, तो ज्यादातर फ्रेमिंग जो है यूपीएससी का अभी जो है दो स्टेटमेंट्स और उस तरीके से फ्रेमिंग है ऑप्शंस का, ऑल्दो 3 स्टेटमेंट्स एंड 4 स्टेटमेंट्स और इवन मोर देन 4 स्टेटमेंट्स इन few of the MCQs are being given. Let's see which of them are correct statements. Nord Stream pipeline is a natural gas pipeline between Norway and Germany. Now Nord Stream pipeline is in news because of Russia Ukraine conflict, and it was in news because of some kind of leak, and after this leak Russia stopped gas export, ठीक है, through this pipeline for repair work, and that's why it was in news. It is natural gas pipeline but it is between Russia and Germany, and yes, it is passing through Baltic Sea. It is passing through Baltic Sea. So first is incorrect and second is correct statement. Nord Stream 1 and Nord Stream 2. 2 is the recent one, and 10 years back Nord Stream 1 was we can say that set up or established, and this is basically exporting the natural gas from Russia, which is one of the largest producer of natural gas. Largest reserves in the world of natural gas are there in Russia. It is exporting that natural gas to European countries, and due to this war now these European countries are looking for alternative for energy source. You should know that Europe is very much dependent on natural gas exported from Russia, especially for heating purpose and power production, electricity production, heating during the winter times. ठीक है, so answer should be here 2 only. We have to identify correct statements. Now moving on to second, Maitri Setu. This was in news recently. Right, Maitri Setu, sometimes seen in news, is said to augment the bilateral relations between India and Bangladesh. Okay, so this is the information given in the question. It connects Bangladesh with which of the following Indian states? Now we have with Bangladesh, how many states or which states are having border with Bangladesh? We all know that West Bengal is there, Meghalaya is there, Assam is there, thereafter Tripura and Mizoram. Right, so yes, all of these are there in the options, so one may get confused and need specific information, knowledge about this. Maitri Setu is basically being built as a bridge over a river in Tripura. रिवर का नाम क्या है? फेनी रिवर. ये काफी न्यूज में था पिछले 1-2 साल से, तो आपको पूछा जा सकता है. आंसर इज त्रिपुरा. ओके, so B is the correct answer in this case. Now consider the following statements about Financial Action Task Force. ये न्यूज में था द हिंदू न्यूज़पेपर में, because there will be Financial Action Task Force review for this year, and yes, this FATF के basics आपको पता होने चाहिए. It is very important, we can say international watchdog for terrorist financing and money laundering, and we are the member of FATF. This Financial Action Task Force was established under the aegis of G7 grouping. ठीक है, not G20 grouping, and it is outcome of G7 Paris summit in 1989. So it is incorrect statement. G7 grouping होना चाहिए. FATF can review the action which had already been taken at national and international level, especially regarding countering the terrorist financing and money laundering. तो ये सारा review किया जाता है. So this is correct statement. If a country is considered safe haven for supporting terror funding and money laundering,
it is added to FATF's blacklist. Generally we call it as the FATF maintains two lists. उसका नाम ये नहीं है कि ब्लैक लिस्ट है या फिर ग्रे लिस्ट है, जनरली ये नाम ऐसे दिए जाते हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट. नाउ इट इज सेइंग दैट ब्लैक लिस्ट, ठीक है, सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ ब्लैक लिस्ट, रादर इट इज पार्ट ऑफ ग्रे लिस्ट. फॉर एग्जांपल जो पीछे पाकिस्तान था या फिर कई सारे कंट्रीज जो है जो टेरर फाइनेंसिंग फंडिंग का सपोर्ट किए जाता है या इट इज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन फॉर द सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो ग्रे लिस्ट में जाता है. विच आर द कंट्रीज इन ब्लैक लिस्ट? ब्लैक लिस्ट में जो होता है वो नॉन कोऑपरेटिंग कंट्रीज जो होता है, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग रिगार्डिंग वर्किंग अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, तो वो डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में जाते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव नॉर्थ कोरिया और ईरान, they are part of this list here. Okay, so this is again incorrect statement. We have to identify the correct statement, that's why answer should be here 2 only. Fine. Okay. RBI recently increased repo rate aggressively to counter increasing inflation. In last 1 year, a substantial increase in repo rate we have seen to deal with inflation. ठीक है, कौन सा इन्फ्लेशन होता है ये? रिटेल इन्फ्लेशन, मेजर्ड इन इंडिया थ्रू CPI. Okay, which of the following could be possible impact on Indian economy? Okay, impact of this measure taken by RBI, ठीक है, कि रेपो रेट बढ़ाया है, तो वो क्या होगा? इन UPSC फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन, UPSC जनरली आस्क अप्लाइड क्वेश्चन. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही जगह पे मे बी आपको ये सारे 4 पॉइंट कोई बुक में या न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे. सो यू नीड टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड डेप्थ इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, देन only you can correctly answer this question here, right? So increase in repo rate, slump in Indian stock market, yes. When there is increase in repo rate, what will happen is there will be increase in savings rate and there will decrease in investment rate. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय द इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स, तो इसके लिए क्या होगा? स्टॉक मार्केट जो है गिर जाएगा थोड़ा सा. इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, दैट इज करेक्ट. वन शुड अंडरस्टैंड दैट द बॉन्ड प्राइसेस आर व्हेन द बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज, सो वी कैन से दैट द यील्ड डिक्रीज, द बॉन्ड यील्ड डिक्रीज. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट शॉर्ट टर्म में जो है बॉन्ड यील्ड जो है उसका बढ़ जाएगा, बट ये जो है लॉन्ग टर्म में भी बॉन्ड यील्ड डिक्रीज नहीं होता है, थोड़ा सा बढ़ता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट. आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इक्विटीज टुवर्ड्स लेस रिस्की डेट इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में जो है रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो देयर वाज फ्लाइट ऑफ FPIs स्पेशली डॉलर जो है वापस से यूएस चला गया, क्योंकि यूएस में जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो वहां पे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है, सो ऑल दिस FPI फ्लाइट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FIIs जो है वो चले गए थोड़े. तो बेसिकली इट इज आउटफ्लोज ऑफ फंड्स फ्रॉम इक्विटीज. ओके, सो दिस इज करेक्ट. 1 to 4 ओनली, C शुड बी द आंसर इन दिस केस. ऑलराइट, सो इकोनॉमी से इस तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, राइट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशन सहभागिता, now government schemes, initiatives, programs, every year UPSC asks question, especially from economy perspective also. Government schemes, welfare schemes, and some initiatives like for example from environment protection perspective. This is the mission Sahbhagita related to effectively managing the network of 75 wetlands. Now we know that as a part of we can say Amrit year, or we can say that the 75 years of independence we celebrated 2022. So last year the Ministry of Environment and Forest announced Mission Sahbhagita for joint management, community management of network of 75 wetlands, so as to have sustainable development and ecologically sustainable
exploitation of wetlands, we can say, whatever the services, ecological services, ecosystem services provided by the wetlands. So C is the correct answer in this case. All right. इस बार जो बजट में कौन सा गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस किया गया है इसके रिलेटेड, वेटलैंड से रिलेटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या था वो मिशन, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको अभी बताता हूं। यस, अमृत धरोहर, राइट, पार्डन मी, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं याद रखने के लिए, बट ये आपके लिए एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो अमृत धरोहर एंड दिस इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स, एंड मिष्टी जो स्कीम है और इनिशिएटिव है, दिस इज रिलेटेड टू मैनग्रोव्स। वी हैव रिसेंटली टॉक्ड अबाउट मिष्टी स्कीम आल्सो, ठीक है। तो ये याद रखना है, दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statements with reference to aftershocks of earthquakes. Now we generally read about this. Aftershocks are basically the tremors felt after the major shock. After the major shock, ठीक है। तो major shock जो होगा वो क्या होगा, high in magnitude. Magnitude is measured in what? Richter scale. Richter scale. ठीक है। So let's find out the statement. Aftershocks are sequence of earthquakes that happen after the larger main shock. This is correct. Aftershocks can continue for longer period of time. Several tremors can be felt after, like what we have observed in Turkey and Syria. मेन शॉक जो है 7.2 या 4 के आसपास था, 7.4 या 7.8 रिश्टर स्केल पे, and thereafter many tremors or aftershocks were felt during the day after that, ठीक है। तो ये सही है। thereafter aftershocks are stronger than the main seismic event, this is not correct, ठीक है। ये comparatively weaker होता है रिश्टर स्केल्स के हिसाब से, so this is incorrect. 1 and 2 only is the correct answer in this case. All right. Consider the following questions regarding micro LED. There was this very good article in the Hindu newspaper text and context page talking about micro LEDs and how they are getting more importance. Recently Microsoft is focusing on using micro LEDs for production of iPhone, और ये Apple और ये सब जो प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं माइक्रो LED यूज करके। Okay, so micro LEDs will be replacing OLEDs, organic light emitting diodes. OLED अभी अभी आ रहा था, उसी को immediately replace करने की कोशिश हो रही है, because it is more, scalable and larger scale, and it is more efficient. It will give more light, we can say color distinction, clarity of the image. ये सारी चीजें इसमें involved है। Micro LEDs are self emanating diodes, very micro diodes होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज में। This is correct. The basis of micro LED technology is sapphire, which can shine on its own forever. This is correct. Remember this, sapphire is one of the we can say important component of this micro LEDs, और वो जो होता है वो self illuminating होता है forever. So this technology is based on this material. Micro LEDs has limited scalability, not limited, rather it is unlimited, we can say that. कितना भी इसको हम जो है बढ़ा सकते हैं, साइज में हो या फिर जो है number of micro LEDs in a use for particular screens. So this is incorrect statement. Okay, so 1 and 2 only is the correct answer here. Again, B is the correct answer. Okay, fine. Recently seen in news, air launched unmanned aerial vehicle ALUAV is jointly developed by India and which of the following country? अभी ये न्यूज में था, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी ये आया हुआ था, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड व्हीकल। ये किसके साथ हो रहा है? यूएस के साथ। India US is jointly developing this air launched unmanned aerial vehicle, और इसका अभी जो है ट्रायल्स जो
बेंगलुरु में एयर एक्सपो हुआ था, एरो एक्सपो, उसमें हुआ है, ठीक है। In 2023 onwards, this year onwards, the joint production will be there. You should know that defense technology इनिशिएटिव जो है इंडिया यूएस के बीच में, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ओके, यूएसए, रिमेंबर दिस। नाउ मूविंग ऑन, with reference to Geological Survey of India, institution based questions. Every year minimum one question UPSC is asking institution based questions. So every institution, if it is in news, we are trying to cover maximum institutions. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये lectures क्यों important है। Maybe you are skipping any particular institution, आपके ध्यान से वो चला जा रहा है, तो ये आपको यहाँ पर cover हो जाएगा, revision हो जाएगा। Geological Survey of India. Okay, let's find out the incorrect statements. It is attached office of Ministry of Earth Science. One may get confused, geological survey है तो Ministry of Earth Science होगा, but it is not correct. It is attached office of Ministry of Mines. We have separate Ministry of Mines and it is attached office of this. This is incorrect. Its headquarters is located in New Delhi. One can again easily get confused कि main important जो headquarters होता है institutions के वो दिल्ली में होता है. So this is not correct. Its headquarters is located in Kolkata. ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट। इट वॉज प्राइमरीली सेटअप इन 1851 एज एन इंस्टीट्यूशन टू फाइंड कोल डिपॉजिट्स फॉर रेलवेज ड्यूरिंग ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। मेन फंक्शन जो था इसका जब शुरू हुआ था 1851 में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टू लुक आउट फॉर कोल रिसोर्सेज फॉर ब्रिटिश रेलवेज एट दैट, ब्रिटिश इंडियन रेलवेज एट दैट टाइम। तो वहां से इसका जो है शुरू होता है एंड देयर आफ्टर नाउ इट इज लुकिंग आफ्टर द सर्वे ऑफ डिफरेंट मिनरल, ये सारा चीज, ये काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। सो इनकरेक्ट पूछा है, 1 and 2 ओनली आर इनकरेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। Turkey has witnessed deadly earthquake in recent times. Yes, we all know the unfortunate event where around more than 30,000 people had died in recent times. In this context, consider the following statement regarding reasons behind such earthquake in the region. Now you should know some anatomy, the geographical aspects related to what is happening there in Turkey, the plate tectonics aspect. Turkey lies in the confluence of 3 plates. Yes, Arabian plate, minor plates है ये सारे, Anatolian plate is the minor plate and this is major plate, Eurasian plate. ये इन तीनों का confluence हो रहा है. These 3 plates are interacting with each other. These earthquakes were caused due to phenomenon of strike slip. Yes, these 2 statements both are correct, 1 and 2. But what do you mean by strike slip? We all know that the faults between different plates, they are the major reason for, we can say that, earthquakes. अब कैसे होता है ये? समझो ये rock है, ठीक है? This is one rock. We can consider this as large rock, and there is other rock like this. ठीक है, suppose there is huge pressure on this rock and this pressure is locked because of friction here, and if suppose the pressure overcomes the friction, then what happens is this rock will suddenly move in a downward direction. This is called as strike slip. ये phenomenon को क्या बोला जाता है? Strike slip. And yes, majority of the earthquake happens because of this strike slip along the fault zone. दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स फॉल्ट, ठीक है, ये रिवर्स फॉल्ट बोला जाता है। और जब प्रेशर समझो इस रॉक पे ऊपर जाने के लिए है और ये इस तरीके से ऊपर आता है, तो ये नॉर्मल फॉल्ट होता है। Okay, so this is how you should know the basics of faults, folds, because UPSC can ask such kind of question in the prelims examination. Fine, these are the today's 10 MCQs. Again I am repeating, these MCQs are very important. Current affairs को lightly लेना नहीं है। Till the date there was emphasis on reading current affairs. आप monthly magazine पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज पढ़ रहे हैं, but separately आपका MCQ का current affairs के ऊपर practice नहीं हो रहा था। And this is very important to evaluate your knowledge, your understanding of current affairs and the knowledge in the current developments. Okay, so try to follow it on daily basis. You can share, you can like, and yes, you can subscribe the YouTube channel and you can receive the other information, let's say other videos from the Lukman IAS, we can say faculties also. Fine, let us stop then. Thank you.